Propositional logic. Propositional logic. So is something similar to you have been studying in logical thinking course or digital logic design. So many things will be familiar to you, and there would be something new. So first of all, propositions. What are propositions? And then we will talk about propositional logic. So propositions are statements. सबसे पहले हम basic terminology सीखते हैं, and then we will analyze the logic. So propositions are statements whose answer are yes or no. Any statements about which we can say true or false, whether this statement is true or this statement is false. So we can say this is a proposition. So proposition is any statement about which we can say yes or no, true or false, 1 or 0, जिसका आंसर ब्लैक एंड व्हाइट में हो. कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में हम कह सकें इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रोपोजिशन. और फिर ऐसी प्रोपोजिशंस, ऐसी स्टेटमेंट्स का जो भी हम एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे, based on those operations, based on those analysis, we will make some decisions, we will conclude something, we will make some inferences. That would be called logic, propositional logic. So whenever we are writing our programs in our computer programs, जो आप C++ में या Java में programs लिखते हैं, so those programs are sequence of statements, and many of these statements are actually propositions. Not all of these statements, but many of those propositions are actually, many of those statements are actually propositions. Those are the statements जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनका आंसर ट्रू या फॉल्स में है, yes या no में है. For example, whenever we are writing some if-else statements, जब भी हम if-else statement लिखते हैं तो there is some condition in it. If this thing happen, then this thing will happen. If, for example, if x is greater than 10, then execute this portion of program. So if x is greater than 10, so we have to analyze कि x 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है. So answer is, when we analyze this thing, x is greater than 10. So this is actually a proposition, क्योंकि इसका आंसर या तो true होगा या false होगा. Similarly, when we have loops, so in loops we have control statement, an expression, a control expression, which checks whether the condition is true or not. तो हमारा control variable होता है, उस पे हमारी condition होती है. So we check whether this condition is true or false. So जैसे ही वो condition false होती है, we exit from the loop. So again, we check some statement whether it is true or false. तो वो statements, वो expressions जिनके बारे में हम कह सकें it is true or false, such kind of expressions are called propositions. So propositions वो statement होती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये सही हैं या गलत हैं. These are true or false, जिनका आंसर हम yes या no में दे सकें. Their answer is either 1 or 0. Usually we talk in terms of binary numbers. So 1 is usually symbol for true, and 0 is symbol for false. True or false, 1 or 0. So whenever we have answer 1 or 0, that kind of statement is proposition. अगर हम 1 या 0 में आंसर ना दे सकें, वो statement तो होगी लेकिन वो proposition नहीं होगी. So usually जो भी हमारी statements होती हैं, हम जब mathematically express उसको करते हैं, we represent statements with some symbol. For example, P, Q, R, S या X, Y, Z या it could be A, B, C, अपनी आसानी के लिए, ताकि instead of writing the whole statement again and again, we just assign a variable to statement and then we talk about that variable. जिस हम programming में we या mathematics में mathematical analysis में हम करते हैं कि we define a variable and then variable gets a value and then we analyze, we do operations on that variable. इस तरह जो हमारी statements हैं उनको हम कोई नाम दे देते हैं.
वो हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए देते हैं ताकि हमें पूरी स्टेटमेंट बार बार ना लिखनी पड़े. सो हम स्टेटमेंट को कोई नाम दे देते हैं, सपोज P. सो वेदर P is true or false, then it is proposition. So let's look at some examples of proposition. For example, here you can see the first statement. I have given it name P. You can give it some other name, A, B, C, X, Y, Z, M, N, L. It could be anything. So statement P is 2 is equal to 4. This is our first. This is our statement. P is 2 plus 2 is equal to 4. So 2 plus 2 is equal to 4. इसके बारे में हम कह सकते हैं it's true or false. Obviously it is true. So our answer is true. 2 plus 2 is equal to 4. ये statement कैसी है? Yeah, it is true statement. ये दुरुस्त है. So this is a proposition. 2 plus 2 is equal to 4. We can say yeah, it is true. So this is a proposition. So, similarly, next statement is Q. Q is 3 plus 3 is greater than 8. 3 plus 3 is greater than 8. Statement ये false है. This statement is false. Yeah, but we can answer it in terms of true or false. So this statement is also a proposition. So this is a false proposition. This proposition is a false proposition. पहली वाली proposition, it was a true proposition. Second wali, this is a Q is a false proposition. So but still it is a proposition. Its answer is false. So this is a proposition. And next we have a statement, let's suppose we call it R. How many students are there in the class? How many students are there in the class? So we cannot answer it as true or false. So we have to answer it in some number. How many students are in class? So class में कितने students हैं? There could be like 8 students or 10 students or 50 students, but we cannot say yes or no. We cannot say true or false. Answer will be something different from true or false. हमारा answer yes या no में नहीं होगा. अगर इस तरह की statement हो कि is there any student in the class? Okay, in that case we have to say yes or no. फिर वो proposition होगी. Is there any class? Is there? Sorry. If statement is there is a student in the class. There is a student in the class. Then we can say it's true statement or false statement. अगर तो class में कोई student बैठा है, then we will say yes. There is a student in the class. True. ये statement true है. अगर class में कोई भी student नहीं है, तो there is a student in the class. This statement is false. तो फिर वो proposition होगी. लेकिन इस तरह का क्वेश्चन करना कि how many students are in the class. So this question is this statement is ये जो interrogative statement है, सवालिया statement है. So this is not a proposition. इसको हम proposition नहीं कह सकते because its answer cannot be true or false. We cannot answer it in true or false. So इसको हम proposition नहीं कहेंगे. So लॉजिक में जिस तरह आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में भी पढ़ा होगा. So whenever we have variable or in this case we have statements, so we make truth table for these statements or variables. Truth table में क्या होता है कि जो भी हमारे पास variable होते हैं उसकी तमाम possible binary values हम उसकी देख लेते हैं. So अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो इसकी बाइनरी वैल्यूज क्या होंगी? या तो 0 होगी या 1 होगी, ट्रू फॉल्स होगी या ट्रू होगी. 0 इज यूजुअली हम फॉल्स के लिए 0 यूज करते हैं, ट्रू के लिए 1 यूज करते हैं. दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी. इट कुड बी अदर वे अराउंड आल्सो, लेकिन एक जो जनरल टर्मिनोलॉजी है, 0 इज यूज्ड फॉर फॉल्स, 1 इज यूज्ड फॉर ट्रू. So कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. अगर तो वो कोई तीसरी वैल्यू लेती है,
स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है तो फिर ये प्रोपोजिशन नहीं होगी। प्रोपोजिशन होने के लिए लाजमी है कि इट शुड टेक ओनली टू वैल्यूज, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई और तीसरी स्टेटमेंट ये नहीं ले सकती। सो कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। तो इसका जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, सो स्टेटमेंट P इट कैन टेक आइदर वैल्यू फॉल्स और ट्रू, 0 और 1। So this is an important thing. Opinions, interrogative statements are imperative sentences or not propositions. क्योंकि उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते ये ट्रू है जो फॉल्स। ओपिनियन हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। सो लाइक आई लाइक फॉर एग्जांपल आई लाइक मैंगो मिल्क शेक। So okay, a person can like mango milkshake and other person may not like mango milkshake. Interrogative जैसे भी हमने किया कि what are the number of students in the class या are you fine या इस तरह का। So these are interrogative statements, वो proposition नहीं होती। या imperative sentences, for example sit down or go out of the class या eat your lunch. So these are imperative statements, so these are not propositions. Proposition जिसके बारे में clearly हम बता सकेंगे it's true or false depending upon our current circumstances, facts, definitions वगैरह वगैरह. So let's look at some examples. Today is Monday. तो अगर तो आज Monday है, so statement is true. If today is not Monday, then statement is not true. So the statement today is Monday is a proposition. So it can be either true or false. Today is Monday. It cannot have any other thing. So the derivative of sin x is cos x. So sin x का derivative, yes, it is cos x. Cos x का derivative minus sin x होता है. Sin x का derivative cos x होता है. So derivative of sin x is cos x. Yeah, that's true. So this is a proposition. Every even number has at least two factors. Is it true or false? Of course, it has to be either true or false. So this is proposition. But it is true proposition or false proposition. Every even number has at least two factors. So is it true or false? जो भी even number होगा उसके कम से कम दो factor lazmi honge. So is it true or false? And we find some exceptions, and we have found 2 and 0 as exceptions. हम 2 को factorize नहीं कर सकते. Similarly 0 इसको हम factorize नहीं करते. So 0 is even number, but it doesn't have its factors. So every number has at least 2 factors. This statement is not true. जब every का लफ्ज use हुआ, it means each and every tamam even numbers without any exception has at least 2 factors. ये statement ये कह रही है. लेकिन we have got some exception, so this statement become false. It is a proposition, it's a false proposition. The answer is false. So this is proposition, but this is a false proposition. So the first 3 statements are propositions. Today is Monday. If it is Monday, then it's true. If it is not Monday, then it's false. The derivative of sin x is cos x. Yeah, that's true. So it's true proposition. Every even number has at least 2 factors, which is not true because not every number has at least 2 factors. We have some exceptions like 2 and 0. So this is a false proposition. On the other hand, the last 3 statements are not propositions. जो अभी हमने बात की पिछली स्लाइड में कि opinions, interrogative and imperative sentences are not propositions. So pehli statement C++ is the best language. So this is quite subjective thing. It's just like an opinion. So C++ could be best language for some applications in certain scenarios.
लेकिन किसी और सिनेरियो में हो सकता है जावा इज द बेस्ट लैंग्वेज और पाइथन could be the best language or some other language could be the best language. So this statement is just like a personal opinion of someone that C++ is the best language. It's not a universal fact. So this is not a proposition. Where is when is the pretest? So this is an interrogative sentence. When is the pretest? So answer should be ke pretest exam could be on Thursday or Friday, but answer is not yes or no. Answer is not true or false. So this is not a proposition. Do your homework. So this is like imperative sentence, commanding sentence. Do your homework. Eat your lunch. Go to the park. So this kind of statements are not propositions. इसका आंसर इस तरह की स्टेटमेंट को हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते. So these last three statements are not propositions. Few more examples. Which of the following statements are propositions? For example, Washington DC is the capital of USA. Yeah, that's true. Everybody knows. So this is true. So this is proposition. Jakarta is the capital of Indonesia. Again, the answer is true. So this is a proposition. 2 plus 3 is equal to 5. So we can say this is true. So it's proposition. 5 plus 7 is equal to 10. 5 plus 7 is actually not equal to 10. It's 12. So this is false. Yeah, but answer is true or false. The answer is false. So this is a proposition. It's a false proposition, but it is a proposition. So 5 plus 7 is equal to 10 is a proposition. How about this one? X plus 2 is equal to 11. Is it proposition or not? X plus 2 is equal to 11. Actually, we cannot say it's true or false unless we do not know the value of x. If value of x is equal to 9, in that case it's true. If value of x is something other than 9, then it is false. So it all depends on the value of x. If value of x is not given, we cannot say it's true or false. अगर हमें x की वैल्यू नहीं पता, हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते. So x plus 2 is equal to 11. This itself is not a proposition. हाँ, अगर हमें x की वैल्यू given हो, for example, अगली स्टेटमेंट में x is equal to 5, x plus 2 is equal to 11, and x is equal to 5. Now we can say that x की वैल्यू 5 है, so this is 5 plus 2 is equal to 11, which is false. So this is false proposition. So अगर तो x की वैल्यू given नहीं है, we cannot say it's true or false. लेकिन अगर x की वैल्यू given है, then we can say true or false. फिर ये proposition बन जाएगी. Answer this question. So this is like imperative statement. Answer this question. So we have to answer the question. So answer is not a true or false. So answer this question. इस तरह की statement is not a proposition. Last statement is 2 raised per n is greater than equal to n at 200. So it's just like x plus 2 is equal to 11. उस तरह की statement है. If we know the value of n, then it is either true or false. अगर हमें n की value नहीं मालूम, then we cannot say it's true or false. So without the value of n, this is not a proposition. So over here I have highlighted these in the circles are not propositions and other statements are propositions. Yeah, over here the statements in the red are not proposition, statements in black are propositions. We often have more than one propositions and then we have to analyze those propositions. जब हमारे पास दो से ज्यादा statements आ जाती हैं, propositional statements, उनको हम combine करते हैं and then we analyze those combined statement. जो दो से ज्यादा statements को जब हम combine करके एक नई statement बनाते हैं, this new statement is called compound proposition. This is called compound proposition. So compound proposition is just an other proposition. एक नई हमारे पास extended statement बन गई, extended proposition बन गई. So इसके बारे में then we have to say whether it is true or false.
सो कंपाउंड प्रोपोजिशन को हम कंपाउंड प्रोपोजिशन में जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं, उनको हम कुछ ऑपरेशंस के जरिए आपस में ज्वाइन करते हैं. those operations those operators are called logical connectives. So these logical connectives you have studied in digital logic design. Often, for example, we negation of some statement. इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं. So ऑपरेटर हमारे पास क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स negation है, हम नोट कर देते हैं किसी भी स्टेटमेंट को. एंड ऑपरेटर है, दो स्टेटमेंट हैं, उनको हम एंड ऑपरेशन के जरिए. And then we have OR operation. So two statements join with OR operator. Then we have XOR, and we have so these 4 statements. So you have come across in digital logic design course as well. And there's something new, it's called implication. It's denoted by arrow sign. And then there is some other thing, it's called bicondition. So bicondition is like how to say double-sided implication. So it's like forward and backward implication. So implication क्या होती है, इसको हम study करेंगे. So this is something new for you, but negation and or exclusive or is something familiar to you from previous course. So first of all, let's look at negation. Negation is simply when we negate a statement. किसी भी statement को हम not कर देते हैं, so this become its negation. For example, if I say 2 plus 2 is equal to 4, this is a statement. So इसका not क्या होगा? 2 plus 2 is not equal to 4. या यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है टुडे इज मंडे, सो इसकी निगेशन इज टुडे इज नॉट मंडे. निगेशन को वी यूजुअली रिप्रेजेंट विद दिस निगेशन साइन. इसको आप नॉट पी भी पढ़ सकते हैं, या निगेशन ऑफ पी. पी इज आवर प्रोपोजिशन स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ पी उसकी प्रोपोजिशन की निगेशन होगी, नॉट हो गया. या वी कैन रिप्रेजेंट इट विद दिस टिल्डा साइन. वी कैन पुट टिल्डा ऑन टॉप ऑफ पी और इन द बिगिनिंग ऑफ पी, at the start of P on the left side. या P bar का साइन हम P के ऊपर लगाते हैं. या we can put exclamation sign beside P. So exclamation sign, या इसको हम not P ही पढ़ते हैं. So in our programming we often use this symbol, not P. So आप जब पेपर पे लिख रहे हैं, you can use this not P. You can use any of these 4 notation. It means same thing. These are all equivalent statements, equivalent expressions. So these are all negations. So for example, today is Monday, today is not Monday. इसकी negation ये होगी. If we have a statement Q, X is greater than 10. So इसकी negation क्या होगी? X is not greater than 10. या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि X is less than equal to 10. X is greater than 10, so इसका negation क्या होगी? X is less than equal to 10. Equal का symbol important है, because when X is greater than 10, so if you look at the number line, इसका negation क्या होगी कि X is not greater than 10, तो X is equal to 10 भी इसकी negation में आ जाएगा. So X is less than equal to 10. So be careful about this equality sign. अगर हमारे पास statement ये हो कि X is greater than equal to 10, greater than equal to 10, तो फिर इसकी negation क्या होगी? X is less than 10. फिर equality का symbol नहीं आएगा. So be careful about this equality symbol. कि अगर तो statement में equality symbol नहीं है, तो उसकी negation में we have to put equality as well. अगर statement में equality होगी, तो negation में equality नहीं होगी. So statement and its negation, they are completely complement to each other. ये एक दूसरे के complement है, so there is no overlap between a statement and its negation. ये बिल्कुल एक दूसरे के like non-overlapping चीजें हैं. So for the truth table, जब हम किसी statement को बनाते हैं, so we are looking at all possible values. हमारी statement P या तो true होगी या false होगी.
So whenever our statement P is false, तो उसकी negation true होगी. अगर हमारी statement P true है तो उसकी negation false होगी. For example, if statement P is today is Monday, उसकी negation no, today is Monday. If it is true, so इसकी negation क्या है? Today is not Monday, so that become false. और अगर हमारी statement today is Monday, it is false, so इसकी negation today is not Monday, so that becomes true. So P and P bar, they are always opposite to each other. If one is if one statement P, if P is 1, then not P has to be 0. If P is 0, then not P has to be 1. If P is true, not P is false. If P is false, not P is true. So here is the truth table is the same example of today's Monday. So this is something important that we should know. Negation of true is false. अगर true को आप negate करेंगे तो answer is false. Or in other word, negation of 1 is 0. या not of 1 is equivalent to 0. And negation of false is true. Negation of 0 is 1. So not of 0 is 1. Logical AND. So whenever we have two statements P and Q and we are joining them with AND operator, so this is called conjunction. AND को हम conjunction कहते हैं. So whenever we are joining two statements P and Q with logical AND operator, so what will be our output? What can we say about this compound statement? For example, we have two statements. यहाँ पे हमारी पहली एग्जांपल लिखी हुई है. Let's look at this thing. It is raining and it is warm. So we have two statements. First statement is it is raining. Let's call it P. P is it is raining. And the second statement, it is warm. Let's call it Q. So statement Q is it is warm. So it is raining and it is warm. So this is P and Q. Suppose it is raining and also it is warm. जैसे हमारे यहाँ जुलाई अगस्त के महीने में होते हैं. So if someone comes and say it is raining and it is warm, if both statements are true, so we will say yeah, that is true. अगर इनमें से कोई एक statement भी false हो जाए, for example, it is raining but it is not warm, it is cold, and someone comes and say, oh, it is raining and it is warm, so we will say no, it's not warm, it's cold. So your statement is false. या बारिश नहीं हो रही, it's not raining but it is warm. So someone comes and say, oh, it is raining and it is warm. So we'll say, no, it is not raining. So your statement is false. अगर statement का कोई एक हिस्सा भी false हो गया, the whole statement become false. और चौथा केस क्या है कि someone comes and say it is raining and it is warm and actually it is not raining and it is not warm. So obviously we will say that your statement is wrong. And के लिए जरूरी है कि तमाम जो इसकी सब स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी एंड स्टेटमेंट जो कंजंक्शन है ये ट्रू होगी. अगर कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, द होल एक्सप्रेशन बिकम false. The whole expression becomes false. So if you look at the truth table, if our statement P and our statement Q both are false, so P and Q is false. If P is false and Q is true, 0 and 1, so answer is false, 0. If P is true and Q is false, true and false, so answer is 0, answer is false. It is true only when P and Q both are true. 1 and 1 is equal to 1. So both statement are in certain case कभी कभार हमारे पास दो से ज़्यादा भी सब statements होती हैं, तो तमाम की तमाम statements जब true होंगी, only then we can say कि conjunction and operation is true. Second example, 2 plus 3 is equal to 5. Yeah, that's true. And under root 2 is less than 2. Yeah, that's also true. So true and true is true. So this whole statement becomes true. Schrodinger's cat is dead and Schrodinger's cat is not dead. Schrodinger's, you know, he's like father of quantum physics. His cat is famous, cat in the box.
So if Schrodinger's cat is dead, suppose this statement is true, then the other statement, Schrodinger's cat is not dead, then it has to be false. दरमियान में कोई और चीज नहीं है. If we say Schrodinger's cat is dead, this statement is false, then Schrodinger's cat is not dead, that has to be true. So this is 1 and 0. So 1 and 0, the 0 and 1 is going to be false. It's going to be 0. So this again we have analyzed. So P is equal, P is statement P is 2 plus 3 is equal to 5. Statement Q is under root 2 is less than 2. So in दोनों को both statements are true. So P and Q and operator को हम wedge symbol से represent करते हैं. Wedge are it's just like upside down V, ulta V आप समझ लें. So usually we call it wedge operator. And so P and Q. So P and Q. So this is 2 plus 3 is equal to 5 and under root 2 is less than 2. Both are true. So 1 and 1 is equal to 1. अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट P है और दूसरी स्टेटमेंट उसका हम एंड लेते हैं इसी की निगेशन के साथ. So if P is true, then not P has to be false. If P is false, then not P has to be true. So this is like P and not P is 1 and 0. So answer should be 0. 0. Answer should be false. So whenever we have number of propositions, P1, P2, P3, Pn, हमारे पास काफी सारी propositions हैं. उन सब को हम and operation से combine करते हैं. We take its conjunction. और इस तमाम statements में से अगर कोई एक भी false हो गई, the whole conjunction becomes false. और अगर तमाम की तमाम statements true हैं, only then this statement is true. So and operator, it's quite strong operator. It requires that each and every statement should be true. भी एक statement भी false होगी, whole expression become false. So here again it's truth table. So we often represent and operator with multiplication sign. Like if we have A and B, two inputs, so output is y is equal to A B या A dot B भी लिखते हैं, just simple A B भी लिख सकते हैं. So it's just like multiplication. It's not exactly multiplication, but it looks like multiplication. Like 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. So next, our logical operator is OR operator. So again, it's exactly the same that you have studied in digital logic design. So OR operator is true when any one of the statement is true. अगर सारी statements false हो जाएं, then OR is false. लेकिन अगर कोई एक statement, at least one statement is true. कोई एक भी statement true हो जाए, या सारी true हो जाए, या एक से ज़्यादा true हो जाए, then OR operator is true. So for example, it is raining or it is the second day of the lecture. It is raining or it is the second day of the lecture. So there is some comment from Daniel. Basically, it is opposite version of statement negation. I don't know if you are talking about AND operator. Okay, AND operator is opposite to negation, तो नहीं, ऐसा नहीं है. And negation or AND operator ये different चीजें हैं. So okay, so OR operator. So OR operation is also called disjunction. AND को हम conjunction कहते हैं, OR को disjunction कहते हैं. Disjunction में OR operator में अगर हमारे पास कोई एक statement भी true हो जाए, so we are through. We can say the statement is true. एक से ज़्यादा भी true हो सकती हैं. If all statements are false, in that case the whole statement becomes false. Notation for OR operator is opposite to AND operator, so it's V symbol. So OR operator के लिए हम V का symbol use करते हैं.
एन के लिए अपसाइड डाउन वी या वी कॉल इट वेज सिंबल, वेज सिंबल या अपसाइड डाउन वी यूज होता है. सो और के लिए वी सिंबल यूज होता है, पी और क्यू. सो इफ 0 और 0 both statement are false, p and q, so p 0 और 0, p और q is going to be false. देखिए इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, 0 और 1 या 1 और 0, so we get 1 और 1, या दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाए 1 और 1, so we get 1. For example, it is raining or it is the second day of lecture. So this is a statement. It is raining or it is raining or it is the second day of lecture. So we have to see whether it is raining or not. अगर तो raining हो रही है, even we do not have to go to the second statement. Then the whole statement becomes true, whether it is second day of lecture or not. So in any ways, it is raining, या तो raining हो रही होगी या raining नहीं हो रही होगी. It is second day of lecture, so it will be either second day of lecture or it will be not second day of lecture. So अगर तो raining नहीं हो रही और it's not second day of lecture, the whole statement becomes false. लेकिन raining हो रही है और it's not the second day of lecture, the statement becomes true. It is raining and or it is second day of lecture. Second part उसका false है, लेकिन पहली बात ठीक है. बारिश हो रही है या आज दूसरा लेक्चर है. So suppose outside it is raining, so the whole statement becomes true. Suppose outside is not raining and the person claims it is raining or it is second day of lecture. लेकिन this is second day of lecture actually. So lecture का दूसरा दिन ही है. It is second lecture. So then we will say, yeah, okay, you are true. Although it is not raining, but it is second day of lecture. या इसकी दोनों बातें ही true हो. Raining भी हो रही है and it is the second lecture as well. So the whole statement becomes true. Second statement is 2 plus 2 is equal to 5. We know it is false. Or under root 2 is less than 2. Yeah, but that is true. Under root 2 is less than 2. So the whole statement becomes true. Third one is interesting. You may have cake or ice cream. If you are a logician, you follow the logic, then you have choice. You can take cake, you can take ice cream, and you have option. You can take both cake and ice cream, because this is OR operator. If you are thinking according to logic, according to discrete math, according to computer science, yes, you are allowed to take both cake and ice cream. Excuse me, sir. Yes. जी सर मैंने ये पूछना था कि हम प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए हम इनको ट्रू और फॉल्स मतलब क्या करेंगे. जी जी जी. क्योंकि अगर इट इज रेनिंग और yeah, I mean that's true. According to current scenario, आपके जो भी आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस जो भी होंगे उसको देखते हुए ही आप फैसला करेंगे. I mean it's just like raining, तो ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है. I mean it's not for it was raining or it was raining in 31st May. नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है सर. अब जैसे मतलब कि आपने इट इज द सेकंड डे ऑफ लेक्चर, तो मतलब कि अगर नहीं है या कोई भी अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर एग्जैक्टली मतलब मैं वही कह रही हूँ. हम लोग अपनी प्रेजेंट कंडीशन को, करंट जो सिचुएशन है उसको देखते हुए हम लोग मतलब कि ट्रू और फॉल्स करेंगे. अगर इसमें एक भी ट्रू नहीं होगी तो मतलब कि हम वो फॉल्स होगी ना. जी जी. मतलब ये सेकंड डे ऑफ लेक्चर भी नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है तो then everything is false. Then it's false. For example, अगर हम अभी के देखें, so if someone comes and say it is raining or it is second day of lecture, हमें पता है कि बारिश नहीं हो रही है अभी और हमें ये भी पता है कि ये second day of lecture नहीं है. So of course the whole statement is false. So जो हमारी अब ये देखें जो second statement है, this is some mathematical facts. I mean this is like I mean it's independent of time. 2 plus 2 is equal to 5 और under root 2 is equal to 2. ये अगर आज ठीक था जो आज गलत है तो कल भी ठीक या गलत होगा.
सो इस तरह जो पहली वाली जो हमारी इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं इंग्लिश की स्टेटमेंट्स, सो दीज आर ऑल रिलेटिव अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। जिस तरह आप कह रही हैं कि करंट सिनेरियो को देखते हुए हम कहेंगे दैट्स ट्रू, हम अपने करंट सिनेरियो करंट सिचुएशन को देखते हुए ही इसका आंसर दे सकते हैं। अगर तो इट इज रेनिंग, अगर तो रेनिंग हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो नहीं हो रही। तो जो इस वक्त की सिचुएशन होगी उसके उसी के मुताबिक ही उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही जवाब देंगे। Yeah, Daniel, it's true. It's just like OR gate. So, like the third statement is you may have cake or ice cream. So, just like if someone has gone to the party and he is given option, you can take cake or ice cream. Actually, according to logic, we can take cake, we can take ice cream, or we can take both. But we have to be careful. जो हमारी colloquial conversation होती है, जो हमारी रोजमर्रा की बात, उसमें और का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारे लॉजिकल और है और जो हमारा डेली कन्वर्सेशन का और है वो थोड़ा सा फर्क होगा। जस्ट अभी आप इमेजिन करें इफ यू आर इन द पार्टी एंड समवन आस्क यू मे टेक केक और आइसक्रीम, और आप कहते हैं कि लॉजिक में तो हमने ये पढ़ा था कि मैं दोनों भी ले लूं तो इट्स ट्रू, और आप दोनों केक भी ले लेते हैं और आइसक्रीम भी ले लेते हैं। सो पीपल विल से दिस इज नॉट फेयर, आपको चॉइस ही ये थी कि यू कैन टेक केक और आइसक्रीम, दोनों तो नहीं लेने थे। सो दैट और ऑपरेटर, दैट और द वर्ड और जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सक्लूसिव और। कि आपको ऑप्शन दी गई आप ये ले लें या आप वो ले लें, आप दोनों नहीं ले सकते। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉजिकल और। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लूसिव और का। आई विल कम टू एक्सक्लूसिव और इन अ व्हाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिकल और, इसको जरा हम कंप्लीट कर लें। सो इसका ट्रुथ टेबल तो क्लियर हो गया कि व्हेनेवर P and Q बोथ आर फॉल्स, P और Q इज फॉल्स। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए देन इट इज ट्रू। एक या एक से ज्यादा कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए देन इट इज ट्रू। So if we have OR operator of a statement and its negation, P or not P, so then it has to be 1. क्योंकि अगर P 0 होगा तो not P 1 हो जाएगा, अगर P 1 होगा तो not P 0 होगा. So it's like 1 or 0. So it's always 1. So OR operator में P or not P is always true. And if we have a number of proposition P1, P2, P3, Pn, और उसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए then whole OR operator, the whole disjunction becomes true. P1 there should be OR operator है, P1 और P2 और P3 और and so on, मतलब जितने भी propositions हैं, if you are taking और ऑपरेटर और इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाए, एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, देन होल एक्सप्रेशन इज ट्रू. Sometimes we write it down A plus B for OR operator as well, लेकिन मोस्टली हम इसको B सिंबल से डिनोट करेंगे. एक्सक्लूसिव और वो और है जो हम अपनी आम कन्वर्सेशन में यूज करते हैं. सो जिस तरह केक एंड आइसक्रीम की बात हो रही थी, you may take cake or ice cream. अगर exclusive or है, so you cannot take both. Exclusive or में we cannot take all values as true. So if we have two statements, so हमें या तो पहली choice लेनी होगी या दूसरी choice लेनी होगी. So in exclusive or it is false whenever P and Q are false. So P exclusive or Q is false. And when both are true, P and Q both are true, then P exclusive or Q is again false. So when all statements are true or all statements are false, the output is false. इनमें से कोई एक भी true होगी, then it is true. For example, the circuit is either on or off. आपका circuit, for example, you turn on the light
So it is either on or off. ये दोनों states में नहीं हो सकता. So this is like exclusive OR operation. Similarly, we can see let AB is less than 0. A और B दो numbers हैं, उनका product is negative, less than 0. And now either A is less than 0 or B is less than 0. Both cannot be less than 0. We know positive into positive is positive, positive number into negative number is negative, and negative number into negative number is positive. So अगर A और B दोनों को हम negative ले लें, then their product becomes positive. So AB is less than 0, AB is negative, the product is negative, so it means one of these A and B, A और B में से किसी A को negative होना चाहिए. Either A is less than 0 or B is less than 0, not both. Both cannot be negative. If both are negative, then A, B, their product become positive. Similarly, that cake and ice cream example, you may have cake or ice cream, but not both. हम अपनी डेली लाइफ में जब हम बात करते हैं तो हम ये but not both वाला यूज नहीं, but it is understood that you cannot take both. If in a party you go there and someone asks you, please you can take cake or ice cream, it means कि आप दोनों में से कोई एक ही चीज लेंगे, दोनों नहीं लेंगे. So डेली लाइफ में लॉजिक को यूज करते हुए जरा एहतियात कीजिए. So I hope के exclusive OR and simple OR it is clear. So exclusive OR में when all values are 0, output is 0. When all values are 1, output is still 0. When one value is 0, 1 is 1, then output is 1. Exclusive OR. And if you, I'm sure you know that binary addition. So binary addition is actually use exclusive OR. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 1, 0 is 1, and 1 plus 1 is 0. So binary addition without carry. So exclusive OR. Exclusive OR, we use it too much in our computer science when we are playing with binary numbers, their operations, addition, multiplication, etc. So ये वाले operations, ये वाले logical operations तो familiar हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं. And or exclusive or negation. There is something new. This is called implication. So implication is if we have two statements P and Q. So implication is something like if P happens, then Q will happen. P and Q are our statements. So P implies Q. So for example, if जिस तरह हम कोई electric appliance लेते हैं, so we get a warranty card. Over there it is written, if you follow these instructions, the machine will work fine. So वो हमारे पास एक warranty card होता है कि if you will follow these instructions, our machine, for example, it's like what to say? It's like oven. Okay, it's microwave oven. So if you follow the instructions, this oven will work fine. So अगर तो आप वो instruction follow करते हैं और oven is still not working, so it means you can go and claim for your warranty. Okay, we followed this instruction, but it is not working. So what you promised is not true. आपने जो promise किया था वो false हो गया. So give me my money back or change my appliance. लेकिन अगर आप वो instructions follow नहीं करते, so microwave आपका oven हो सकता है फिर भी चल पड़े या हो सकता है वो ना चले. But now you cannot claim for warranty. I mean, if you go and आप instructions को follow नहीं करते और आपका microwave oven नहीं चलता, so will you go for warranty? If you go, then they will say, our promise was not for this thing. हमारा promise तो ये था कि अगर आप if के बाद की जो हमारी condition है, if you will follow the instructions, अगर आप instructions को follow करें फिर तो ये चलेगा.
आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और वो नहीं चल रहा, सो यू शुड नॉट बी क्लेमिंग फॉर योर वारंटी। और ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड माइक्रोवेव इज स्टिल वर्किंग। हो सकता है ना, आई मीन यू आर नॉट फॉलोइंग 100% इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने दी हैं, बट स्टिल योर अप्लायंस इज वर्किंग। तो क्या आप वारंटी के लिए जाएंगे कि देखिए मैंने तो आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो ही नहीं की हैं एंड द अप्लायंस इज वर्किंग? Will you go for that? Obviously not. If you go for that, so they will say, uh, what do you actually want from us? अगर आपका ओवन चल रहा है तो इट्स फाइन, एंजॉय योर ओवन। हमारा प्रॉमिस, हमारी वारंटी तो इस बात पे है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो की और ये काम नहीं कर रहा, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए और वो काम कर रहे हैं तो ओके, इट्स फाइन, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। जब आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, वेदर यू योर थिंग इज वर्किंग और नॉट, देन आवर प्रॉमिस डजंट से एनीथिंग अबाउट दिस थिंग। हमारा प्रॉमिस इस पे है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो की तो ये काम करेगा। आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो की और काम नहीं किया, देन वी आर रिस्पॉन्सिबल कि हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। लेकिन अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, हमारी स्टेटमेंट अपनी जगह पे दुरुस्त है, अब आपका आगे आपकी अप्लायंस काम करती है या नहीं करती। This kind of thing is called, this kind of statements are called implication. So again, it is a proposition, compound proposition. ये दो propositions हैं, उनको हमने combine किया and we get an other proposition. It is false when our condition is met but our result is not, we do not get our result. So जो पहली condition होती है उसको हम hypothesis कहते हैं या premise कहते हैं। So हमारा hypothesis तो true होते हैं, but we do not get our result, we do not get our conclusion. बाद वाली statement को हम conclusion कहते हैं। If then the statement is false, it should be कि हमारा hypothesis ठीक हो तो हमारा conclusion भी ठीक आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है फिर तो हमारा implication दुरुस्त है, लेकिन अगर hypothesis true है और conclusion नहीं आ रहा, फिर हमारी implication false है। And something, I mean, it becomes confusing, but if we think a little bit, then we can convince ourselves. अगर hypothesis दुरुस्त नहीं है, then we do not guarantee about the conclusion. If our hypothesis is false, हम hypothesis को meet ही नहीं करे, conclusion दुरुस्त भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है। जो हमारी implication है वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे ट्रू है, उसको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि implication हमें क्या बता रही है कि जब आपका hypothesis ठीक होगा तो result ठीक होगा। अगर आपका hypothesis गलत हो गया, result could be anything, then we are not we cannot guarantee you for the result. So if you look at its truth table, we start from the bottom. If hypothesis, if P is true, then Q result should be true. Then this statement, our whole implication, P implies Q, implies को हम arrow के sign से use show करते हैं. So P implies Q, then it is true. अगर आपका hypothesis, आपकी condition meet हो रही है and you are not getting the result, then P implies Q is false. ये implication फिर गलत हो गई। लेकिन अगर आपका hypothesis ही नहीं meet हो रहा, result could be true. So our implication is true. And if you do not meet hypothesis and you do not get the results, our implication is still true. It is only false when you meet the hypothesis and you do not get the conclusion, you do not get the result. Only in that case it is false. इसी की थोड़ी सी example और देखते हैं. Then we will conclude the class. For example, you are given a promise. If you get 100% marks in the final exam, then you will get an A grade. This is the promise. अगर आपके 100% marks final में आते हैं, then you will get an A grade. So the first statement is called P. The second statement is called Q. Hypothesis implies conclusion.
So इसको आप P implies Q भी कह सकते हैं, या you can say if P then Q. So if P then Q, if you get 100% marks in the final, then you get an A. So when this implication is true and when this implication is false, अगर तो आपने 100% marks ले लिए and you get an A grade, everybody is fine, everybody is happy. So this implication is true. But if you get 100% marks and you do not get an A grade, then you can complain. आपका प्रॉमिस तो ये था कि 100% मार्क्स लिए तो A ग्रेड आएगा, हमें तो A ग्रेड मिला ही नहीं. सो आपका प्रॉमिस जो था, आपकी जो इम्प्लीकेशन थी, वो तो फॉल्स हो गई. Yeah, that's true, that's false. If you get 100% marks and you do not get an A grade, तो फिर जो हमारी इम्प्लीकेशन यहाँ पे थी वो फॉल्स हो गई, क्योंकि प्रॉमिस यही किया गया कि अगर आपने 100% मार्क्स लिए तो आपका A ग्रेड आएगा. तो दिस इज इजी. अच्छा, अगर आपके 100% मार्क्स नहीं आते फाइनल में, then we are not guarantee about the result. It is possible you will get an A grade. कि आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि आपके 90% मार्क्स भी अगर फाइनल में आ जाए, या 95% या 99 नंबर आ गया आपके फाइनल में, and you get an A grade, that's fine. मेरे प्रॉमिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. मेरा प्रॉमिस तो ये था कि अगर आपके 100% मार्क्स फाइनल में आ जाते हैं, then you will get an A grade. अगर आपके 100% फाइनल में, maybe you will get an A grade or maybe you will not get an A grade. आपके 100% मार्क्स नहीं आए and you do not get an A grade, so you cannot complain for this promise. And if you do not get 100% marks and you get an A grade, then of course there is nothing to complain, you should be happy. जो स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन है, ये सिर्फ कंडीशन इस चीज पे है, आपके 100% मार्क्स फाइनल में आते हैं, फिर आपका A ग्रेड आना लाजमी है. अगर आपके 100% मार्क्स फाइनल में नहीं आते, रिजल्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ट्रू और फॉल्स, मेरी इम्प्लीकेशन ट्रू ही रहेगी. So this is what we saw in our truth table. अगर आपकी implication fail हो जाती है, then result could be anything, 0 or 1. My implication is true. अगर hypothesis true हो जाता है और result आपको नहीं मिलता, then implication is false. Only then implication is false. कि जो आपने promise किया था, that is achieved and you do not get the result, then it should be false. Implication should be false. So just looking at it, think of an implication as a promise, and if P happens, then Q will definitely happen. If P happens and Q doesn't happen, then implication is false. So this is false if P happens and Q does not happen. The promise is broken. In any other case, the promise is not broken. Suppose P happens and Q also happen. Yeah, P doesn't happen, then Q happen or not, we are not concerned with this. Our promise is there, it is valid, it is true. So the last thing for today's lecture is something called converse. Converse is कि अगर हम अपनी implication को उल्टा दें, हम इसका converse ले लें, इसको हम reverse नहीं कहते, हम the word used is converse. So P implies Q की जगह हम Q implies P कहते हैं. जो आपका रिजल्ट था वो आपका हाइपोथेसिस बन गया, जो आपका हाइपोथेसिस था वो आपका रिजल्ट बन गया. फॉर एग्जांपल, द अबव स्टेटमेंट, इफ यू गेट 100% मार्क्स इन द फाइनल, देन यू विल गेट एन A ग्रेड. P implies Q. अगर इसको Q implies P की शक्ल में लिखें, then it will become, if you get an A, जो हमारे पास पहले रिजल्ट था वो हमारे पास प्रॉमिस हाइपोथेसिस बन गया. If you get an A grade, then you have got 100% marks in the final. कि अगर आपका A grade है, then you have got, it means you have got 100% marks in the final. No, this statement is not the same as P implies Q. P implies Q में क्या था कि if you get 100% marks in the final, then you get an A grade. जहाँ पे क्या है, if you get an A grade, then you got 100% marks. Suppose अगर आपका A grade नहीं आता, so according to this statement, maybe you still have 100% marks. कि आपका प्रॉमिस, आपका जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, रिजल्ट कुछ could be anything.
So if you do not get an A grade, maybe you have got 100% marks. लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर तो ये है कि if you get 100% marks, then you must get an A. So it means ऊपर वाली statement और ये नीचे वाली statement ये same नहीं है. So P implies Q is not same as Q implies P. ये दोनों most of the time they are not logically equivalent. लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है. लॉजिकली इक्विवेलेंट का मतलब है कि जब हम इनके ट्रुथ टेबल में आए, ट्रुथ टेबल इन दोनों के सेम नहीं आते. So we will talk about this more in next class. So we have more about implication and their converse and some other operations that we will discuss in next class.